Okay, so now we are going to talk about phrasal verbs that start with the word take. Take से स्टार्ट होने वाले, शुरू होने वाले तमाम phrasal verbs को हम स्टडी कर लेते हैं, इनका मतलब क्या है और ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकते हैं. So first one we have is called take after. Take after का पहले जो मैंने शुरू के पार्ट 1 में वीडियो के बताया था, take after का मतलब ये होता है कि when you resemble someone in appearance or in character. अगर आप किसी को रिजेंबल करते हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक किसी से मिलती है, तो कैरेक्टर किसी से मिलता है या आपकी अपीयरेंस किसी से मिलती है, तो देन दैट मीन्स यू टेक आफ्टर. इट इज यूजली यूज्ड इन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन कॉन्टेक्स्ट या फिर ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों के क्योंकि वहां से आप अपनी खसूसियत ले सकते हैं. ओके, फरा टेक्स आफ्टर हर मदर. फरा शी अपीयर्स सिमिलर टू हर मदर. She has taken after her mother. यानी कि उसका अपीयरेंस और उसका करेक्टर जो है अपनी अम्मी से मिलता है, रिजेंबल करता है. So now the second phrasal verb is called take back. Take back करना यानी कि किसी चीज को वापस कर लेना, किसी चीज को withdraw कर लेना. किसी चीज को आपने कोई बात बोल दी है, उसके अपने अल्फाज वापस ले लेना, या आपने कुछ गलत काम कर दिया, कुछ गलत एक्शन कर दिया है एंड यू ट्राई टू टेक इट बैक. ठीक है, उसके लिए आप कंपनसेट करते हैं, यू मेक अप फॉर इट, राइट. सो टेक बैक का मतलब यह है द पॉलिटिशियन हैड टू टेक बैक हिज वर्ड बिकॉज द मास पब्लिक रिएक्टेड टू इट. द पॉलिटिशियन हैड टू टेक बैक हिज वर्ड. उसको अपने पॉलिटिशियन को जो सियासतदान था उसको अपने अल्फाज वापस लेने पड़े क्योंकि मास पब्लिक ने जो लोग थे उन्होंने इस पर रिएक्शन किया कि ये बात गलत है. सो he had to take back his words. When you take back, that means you withdraw. ठीक है, it could be an action or it could be your words. Take place. Take place अब यूज होता है कि कोई चीज happen होती है, कोई चीज होती है, right? When something happens, it means it takes place. It takes place. These events took place when my grandfather was young. ये जितनी भी चीजें हुई, जितने भी इवेंट्स हुए, कब हुए थे? जब मेरे ग्रैंडफादर यंग थे, जवान थे. ओके, सो टेक प्लेस मीन्स टू हैपन, राइट. फोर्थ टाइप ऑफ फ्रेजल वर्ब इज कॉल्ड टेक ओवर. टेक ओवर तब यूज होता है कि जब आप किसी जगह पे, किसी चीज पे, किसी आदमी पर पावर गेन कर लें. ठीक है, आप उसको अपने काबू में कर लें, उस जगह को कब्जा कर लें. ठीक है, ये कब्जा लीगली भी हो सकता है और इलीगली भी हो सकता है. दैट मीन्स गेनिंग कंट्रोल और एक्वायरिंग पावर ओवर समथिंग लीगली और इलीगली. He took over the business from his father. Now he has taken over the business from his father, then that means it's going to be legal. लेकिन कुछ चीज होती है कि इलीगली कब्जा कर लिया जाता है. So he took over the empire. ठीक है, उसने इलीगली कब्जा कर लिया उस जगह के ऊपर. टेक ओवर, टुक ओवर, दैट मीन्स टू गेन पावर और टू हैव कंट्रोल लीगली और इलीगली. टेक डाउन मीन्स होता है टू मेक नोट्स और टू फेच समथिंग फ्रॉम हायर प्लेस टू लोअर प्लेस. कोई चीज ऊपर है, ठीक है, ब्रिंग डाउन से भी यही मतलब आ सकते हैं कि कोई चीज ऊपर से उतारी जाए. यू आर टेकिंग इट डाउन, यू आर bringing something down, right? और take down मतलब होता है to make notes, right? When you are taking notes, right? For example, right now you are taking notes. You are making notes. You are taking down the notes. I have taken down many notes in today's class. Now you could say this कि आज के इस वीडियो लेक्चर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला and I have taken down many notes in today's class. Can I take over your name and address? ठीक है, can I make note of? Can I write down your names and address? Can you please tell me? Please take down the box from the top shelf as I can't reach it. ऊपर से please bring it down. Please take that box down from the upper shelf because I cannot reach it so high. Okay, take in means होता है to admit something either mentally or to accept something. ठीक है, to deceive someone. It also means to deceive someone or to take something indoor. For example, we better take this chair in before the rain
before it starts to rain. हमें जल्दी से ये chairs अंदर ले जानी चाहिए before it starts to rain. He is so clever that he took me in completely. Now, took me in completely या take in, it has also some kind of negative connotations. Negative connotation क्या है कि उसने मुझे बेवकूफ बना दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, ठीक है. He deceived, to deceive someone, right? और फिर take in का मतलब ये भी होता है कि to admit something. The news was so appalling that at first he could not take it in. जो न्यूज थी वो इतनी रिपल्सिव थी कि उसको जो है ना वो he couldn't admit it, right? He couldn't take it in. यानी कि आप इसको absorb कर रहे हो, आप कुछ accept कर रहे हो. He couldn't accept that because the news was so appalling. Okay, take off. Take off means होता है कि to remove your garments or to remove a person from a place or leave the ground. किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है? The plane takes off, right? प्लेन जो है ग्राउंड को छोड़ के हवा में उड़ जाता है, takes off. एक तो लैंडिंग होती है और फिर एक टेक ऑफ होता है. फिर आपके है I am taking this ring off, right? किसी चीज को रिमूव करना, और I am taking my coat off, I am putting my coat on, ठीक है. ये सारी चीजें होती हैं टू टेक ऑफ में, ठीक है. फिर दूसरा होता है कि अगर आप किसी जगह आदमी को उसकी पोजीशन से हटा दें. The boy took off his shirt, ठीक है. I took off the lid of the pot. मैंने pot से उसको lid हटा दी. I took it off. I removed that lid. I took off the lid. The plane took off on time. Plane जो taking off time था वो अपने exact time पे हुआ. The plane took off on time. Take two. Take two means होता है to form a habit of doing something or to happily adopt something. To happily adopt something or to form a habit, to form a hobby or to make use in an emergency. ठीक है, इसका एक example देख लेते हैं. Mr. O has taken to eating healthy food. Take two means you are forming a habit. तो Mr. O ने एक नई आदत बना ली है to eat healthy foods. He is avoiding all kind of junk foods. Some men take to military discipline like ducks to water. Okay, so कुछ लोग जो हैं they are so flexible that they are adaptable kind of people. ठीक है, वो चीजों को adopt कर लेते हैं जल्दी, अपनी habit बना लेते हैं. तो जिस तरह बत्तख पानी के लिए जो है ना, बत्तख का बच्चा निकलता है अंडे से डायरेक्ट पानी में जाता है, इसी तरह कुछ लोग भी ऐसे होते हैं कि वो मिलिट्री माइंडसेट के लिए बने होते हैं, डिसिप्लिन के लिए. Some men may take to military discipline like ducks to water. Okay, so now the last type of take phrasal verb is called take up. Take up means to lift something, to admit passengers on conveyance, किसी चीज को सवार करना, किसी को चढ़ाना, या फिर लिफ्ट से किसी से सवार कराना. To engage in a new activity, ठीक है, किसी चीज नई एक्टिविटी को अडॉप्ट कर लेना, ठीक है, कोई किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना, या फिर टू एब्जॉर्ब. फॉर एग्जाम्पल, द एलिवेटर टुक अस अप टू द 7th floor. The elevator took us up to 7th floor. Took us up means to lift something, right? So elevator took us up to 7th floor. The bus stopped to take up the passenger waiting on the bus stop. बस रुक गई ताकि टेक अप कर सके, यानी उसको अपने ऊपर अपनी बस को बोर्ड कर सके, उसमें बस को लोगों को सवार कर सके. टेक अप इसका मतलब ये भी हो सकता है बस में लोग सवार होते हैं, राइट? तो जो बस वाला है, कंडक्टर है, व्हाट इज ही डूइंग? ही इज टेकिंग अप द पीपल इन द बस. माय सिस्टर हैज टेकन अप स्टैम्प कलेक्टिंग बट आई डोंट नो वेदर हर एंथुसियाज्म विल लास्ट. Okay, so newly my sister has developed a stamp collecting habit, right? She has taken up the stamp collecting habit, but I don't know whether if she is going to continue this habit or she is going to leave it completely. So now all these were the phrases of take.